Okay, so let us start this. Once again, let us welcome to the evening lecture. ठीक है, तो अपन ने ये इम्पल्स वगैरह का कुछ क्वेश्चन किया था, है ना? इम्पल्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा समझा था, है कि नहीं? एंड वी ट्राइड समथिंग टू कैलकुलेट एंड ऑल समथिंग, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। इम्पल्स की एक दो क्वेश्चन की थी बस। इम्पल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, बस अगर ध्यान से देखा जाए तो इफ यू आर इंटेलिजेंट का यू कैन लुक ओवर हियर। अपन इसके ऊपर क्वेश्चन पकड़ेंगे, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन का एक सेट पकड़ेंगे, है ना? और उसको शायद मैं कल कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, so if I look into this particular equations, what it is saying that impulse is nothing but change in momentum. So whenever you can find the change in momentum of a system, you can find like look over here. Here we calculated the force, but before that, for this kind of question, we calculated this particular change in momentum or not. So you can say that this change in momentum is also going to be called as impulse. Are you able to get me or not? इसी चीज को हम अपन इम्पल्स बोल सकते हैं आराम से। आर यू एबल टू गेट मी? तो कोई भी चेंज इन मोमेंटम, जब भी हम कोई चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर ले, उसकी कोई भी वैल्यू आ जाए, उसको हम इम्पल्स बोल सकते हैं। मतलब अगर इफ आई कैन फाइंड पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज इम्पल्स। Second thing is, if I look into the impulse equation, it is also an integral of ft dt. That means force time equation can also provide us impulse. Are you able to get me or not? ठीक है, इसके ऊपर ग्राफिकल एनालिसिस के दो तीन क्वेश्चन पकड़ेंगे, बट एक क्वेश्चन ट्राई करो जो कि थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक, बोल रहा है कि इफ फोर्स is varying with respect to time as t square plus 2t, then find the change or yeah impulse imparted, sorry, yeah impulse provided during time t is equal to 1 seconds to 2 seconds. So if force is given time dependent, which is t square plus 2t, then find the impulse which is provided during this particular time interval from 1 second to 2 second over here. Are you able to get me or not? Try this. Go through that. ठीक है, अपन 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 पहले थ्योरेटिकल लेवल में सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, एक दो क्वेश्चन बेसिक बेसिक सब पकड़ के न्यूमेरिकल एनालिसिस कल करने वाला है। इन सारी चीजों की न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही अच्छे वे में कल करने वाला है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? Okay. So can you tell me what is going to be the impulse provided during this particular time period? Okay. 30 seconds from now on. So, what can be the concept applied? We know that J is equal to integrate. Is this? So J is equal to FT dt. That's all, isn't it? And then I'll have to integrate from T1 initial to T2 final or not. So what is T1 initial? 1 second. Then I go to 2 seconds. FT is how much? T square plus 2t dt integrated t square dt from which time to which time? 1 second to 2 second plus 2 outside 1 second t dt from which time to which time? 2 seconds. Are you able to get me or not? Then basically integration of t square is how much? T cube by 3, and that is going to happen from 1 to 2, and that is 2t square by 2, that is going to happen from 1 to 2. If you can find this will be your net impulse imparted, which is something kg meter per second or not. Just calculate this calculation. Can you do this calculation or not? How to, basically how to write the equation, I'll tell you once, after that I'll never tell you. So put the upper limit first, that is 2 cube by 3, yeah. So then lower limit plus 2, 2 square by 2. Okay, so if you are a mathematics also student also, na? Then it is awesome. Now, so based upon this, now you look over this particular
Impulse thing. When I say impulse, I apply a force for some time dt or not, isn't it? So if there is a body, try to understand, try to visualize this concept which I'm going to do right now. Let's suppose there is a body, okay, of mass m, and you applied a force. ठीक है, थोड़ा मैं डेप्थ में जाऊंगा. Can I go into depth now? Sure. So I applied a force on this mass m. But if I look into this particular force graph, how I am applying is I'm applying a force which is acting on this mass for a little bit of time. Okay, means force is not like applied over here as a constant force. How I'm applying is I'm going increasing this force. I'm picking up the maximum value in some time t, and then I'm once again decreasing this force. Are you able to get me or not? This is my force with respect to time t. Are you able to get me? तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो फोर्स है ये तो वेरिएबल फोर्स हो गया ना टाइम के साथ. लेकिन ये जो वेरिएबल कैसा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, बाद में कैसा क्या हो रहा है, डिक्रीज. तो मैं अगर, यस, so I asked you that find the impulse which will be imparted, or yeah, impulse which will be provided by this force in some dt time. Are you able to get me or not? So when I look over here, then this graph is a kind of an unambiguous thing. So how to understand it? Basically, when you are going to apply this impulse, since this force is varying like this sense, so in some time dt, let's suppose if I select some time, a small time dt, so in that small time, the area of this graph will provide the particular force or not? Yes. So what is that area is going to be? To find that area, first of all, we will have to find the average force over here or not. Yes, what we'll have to calculate? Average force, because which kind of force is this? Increasing and decreasing. So then this is why for these kind of variations we say impulse is equal to nothing but f average into time t. Are you able to get me or not? F average, because here the force is varying for each and every interval of time. So the impulse imparted in that delta t will be what? F1 delta t plus F2 delta t and so on divided by n. That will provide me the net force acting for time delta t or not. Yes. So that is why we consider that which force is applied in delta time t, average force, rather than calling it to be instantaneous force. Are you able to get me or not? So then the question arises that what this average force can be. We do not know. If we look into this graph, we still do not know, because we do not have any kind of method to find this particular area under the graph, isn't it? So to understand this average force, can we just write impulse is equal to change in momentum? Yes. So basically average force is nothing but change in momentum divided by change in time. Are you able to get me? Is this clear or not? Now we know that force is equal to mass into acceleration also. Yes. So when I say force is equal to mass into acceleration, then that force is nothing but instantaneous force. Which force? In means, see, yeah. Basically, I'll tell you why, and I'm going to describe this. Wait. So basically, what is the meaning of acceleration? Here, as the force is varying, for every instant, I have a different acceleration on the body or not. Look over here. So for each and every time I have a different acceleration. When I find the change in momentum, basically the momentum will be calculated with respect to this initial point and with respect to this final point or not. बोल है ना? Yes. So that is why the change in momentum with respect to change in time provides which kind of force? Average force over here. Are you able to get me or not? But since at each and every moment there is a different acceleration, then if I find out mass into acceleration, we get the which kind of force? Instantaneous force picked up over here. Are you able to get me or not?
You can say yes. So basically there are two kinds of force, average force and instantaneous force. So average force is calculated with respect to change in momentum, while instantaneous force is calculated with respect to acceleration. Are you able to get me? Is this clear or not? So basically, if we look into this mass, so it will have some acceleration over here, but it will have some velocity v1. Then after time t, this mass, same mass, will have some another velocity v2. And if the acceleration remains constant, if this force remains constant, average force is exactly equal to instantaneous force. Are you able to get me or not? But if the force is not constant, average force is different and instantaneous force is different. You will have to find change in momentum for two different time intervals, while instantaneous will be just mass into acceleration over there. Is this clear or not? Understood? Can I move ahead? So I'll tell you how to apply that instantaneous and average force equations. I'll give you some questions based upon that, and then we'll move ahead. Okay. Now, if I look into the depthness of this, then this is what impulse means. Now, actually, the concept of there is a like here zero force also can be present, which we also called is law of conservation of momentum. So that will be a total new topic. Center of mass, collision, and linear momentum I'll do as a total new topic and a new chapter, and then I'll discuss that. Is that clear or not? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं द थर्ड लॉ के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इजंट? तो देखो अभी तक हमें मालूम चला फर्स्ट लॉ क्या बताया था। फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में बात कर रहा था, है ना? फर्स्ट लॉ इनर्शिया, सेकंड लॉ change in momentum, isn't it? So you can also say inertia of motion, you can say basically. ठीक है? So change in momentum, yes. So delta p, it was talking about delta p. Then the question arises what this third law should talk about. So third law talks about the application of force, how the force is applied. Are you able to get me or not? Okay, so you can say this gives the definition of force, this gives the formula of force, and this gives the direction or application of force. Are you able to get me or not? मेरी बातें समझ में आ रही है ना? So this is what first, second, and yes, yes. So, what does Newton's third law say? We'll see that it says that for every action there is an equal and opposite reaction. Means if you see this rocket engine, what rocket is doing? Rocket is trying to put the particular fuel outside of the rocket or not. Now, now if I say into the particular rocket, so if basically this is written reaction, it should be opposite actually. So this is a kind of action for me, isn't it? I'll burn the fuel. The fuel will come sharply out of the rocket as an exhaust. That is my action. Now you know that for every action there is an equal and opposite reaction. So what will happen? The body will go upwards. Are you able to get me or not? Yes. Is this clear or not? So basically, what is the meaning of this? Is you try to see. Let's suppose there is a block. If I say this is my block. And then if I see the particular, let's suppose I'm pressing this block by another block of mass है, ठीक है? एक ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया, ये ब्लॉक इसके ऊपर क्या कर रहा है? ये मेरा हैंड है, मतलब समझो ये जो ब्लॉक जो मैं दिखा रहा हूँ ना, बेसिकली दिस इज माय व्हाट, हैंड। अच्छा एक बात बताओ, सोचो जरा, ये ब्लॉक की मास मान लो m1 और इसकी मान लो मास कितनी, m2। सो द क्वेश्चन इज सिंपल दैट is Newton's laws, is Newton's laws are valid without the contact? और न्यूटन्स का सारा लॉ नहीं लिख लो, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड विदाउट द कॉन्टैक्ट? टेल मी।
Hmm. Is it valid? No. The answer is almost no. We are ignoring the consideration of electrostatic charges. Are you able to get me or not? So Newton's third law says that without this kind of contact, I'm not going to be present. So how this, what is happening basically, if you see over here, this M2 is trying to push M1, means the action is on M1 or not. But if I look at the reaction is on which block? M2. Are you able to get me or not? So understand that if I look into Newton's third law, this action and reaction pairs appears on how many bodies? Appears appears on two different two different bodies. Are you able to get me or not? So whenever there is an action and reaction pair, if you are going to apply Newton's laws and then you see that there is an action and reaction pair, you are definitely going to understand that these action and reaction pairs must be applied on how many bodies? Two different bodies. Is this clear or not? तो हरदम ही एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे अप्लाई होगा? दो डिफरेंट बॉडीज पे। यही यही चीज समझना जरूरी होता है। जैसे मान लो अगर एक एक्वेरियम है, एक क्या है, एक क्या बोलते हैं उसे? एक्वेरियम। अरे भाई साहब, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना। अब मान ले इसके अंदर एक फिश है, क्या है? एक मछली है। फिश। यस, फिश। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये मछली चलती जाती है कि नहीं? तो इस एक्वेरियम के अंदर अगर ये मछली को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिकली मछली कैसे मूव करती है? फिन्स से अपने वाटर की तरफ फोर्स लगाती है और उसकी वजह से वो आगे बढ़ती है। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या ये मछली भी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? ध्यान से देख तो देख, पता है टीचर तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, क्या बोलेंगे कि अरे भाई ये तो नेट फोर्स जीरो है इस सिस्टम के ऊपर, है कि नहीं? But although the whole net force on the system is how much? Zero. The net force, the force on each particle is zero. That is not true, isn't it? Force on each particle is not zero, isn't it? अगर ध्यान से देखो तो by the fins it is applying a force on the water, and for that there is a reaction by the water due to which this fish is moving or not. So although the net force, अगर मैं सिस्टम को देखूं ध्यान से तो इस सिस्टम के ऊपर की जो नेट फोर्स है वो कितनी है? जीरो है। नेट फोर्स कैसा है? जीरो। लेकिन पार्टिकल के ऊपर, दोनों पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स फील हो रहा है या नहीं हो रहा? और इसी की वजह से नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी फिश इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड और नॉट। आर यू एबल टू गेट मी? इज दिस क्लियर और नॉट? सो हरदम ही न्यूटन्स थर्ड लॉ कहां पे अप्लाई होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ विल बी अप्लाइड फॉर दोस काइंड ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर्स वेयर दीज पेयर्स आर अवेलेबल ऑन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज। तो ऑल्दो बोला जाए कि नेट फोर्स सिस्टम का जीरो है, लेकिन ये जो मास m1 है वो जरूर जरूर फोर्स फील करेगा और m2 भी जरूर जरूर फोर्स फील करेगा। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? और दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की वो कैसी रहेगी? सेम। एग्जैक्टली कैसा रहेगा? सेम। सो लेट्स सपोज इफ दिस इज 1 and this is 2. So Newton's third law says that force applied by 1 on or 2 on 1 should be exactly equal to force applied by 1 on 2. Their magnitude is same, but their direction is different. So that is why we write f of 1 2 is equal to minus of f of 1. Are you able to get me or not? Is this clear? चलो यहाँ तक देखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। Okay. Now, if this means, so their directions are different, but their magnitudes are basically what? Same. So you got to know that if, मैंने तुमसे एक बहुत अच्छी चीज आज क्वेश्चन पूछ दी है, इंटरव्यू में लोगों से पूछते हैं लोग कि अगर एक फिश चल रही है पानी के अंदर तो कैसे चल रही है, जबकि नेट फोर्स तो क्या है सिस्टम के ऊपर जीरो। तो बोलना कि वो नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो है, लेकिन हर पार्टिकल के ऊपर जीरो नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर हरदम टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगता है। आर एबल टू गेट मी और नॉट? Yes. So I'll move with this. So I'll take one more example, like a bird flies forward
by exerting a force on the air, but the air pushes the wings of the bird back, makes the bird move forward. Even if you look at the walking case, kaisa case? Walking. So person, basically there is a force which is exerted by the person on the ground. Okay. So this will generate a particular action of the person or not in the forward direction. So therefore that's why there is a backward reaction. तुम जब आगे बढ़ते हो ना, देखो ना पैर पीछे जाता है, आगे नहीं जाता. Are you able to get me or not? लेकिन जब स्लिप होते हो तो पैर कहाँ जाता है? आगे. Are you able to get me or not? तो इसीलिए वॉकिंग के केस में, वॉकिंग का केस कौन सा लॉ को फॉलो करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है. कौन सी लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ. इज दिस क्लियर और नॉट? मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? So these were all about Newton's laws of motion and all. Now, what we are going to do is to understand all of these were basic things. But I told you that day that Newton's laws is valid for only selected things. Means Newton's laws are good, but Newton's laws are valid in some special kind of criteria. And one of the criteria is Newton's laws is valid for a special kind of frames only. ठीक है? Are you able to get me or not? Second point we get to know that whatever is my Newton's law, कुछ भी Newton's law हो जाए, तो Newton's law में तीन कंडीशंस हैं. अगर देखो ध्यान से, तो एक है इनर्शिया की कंडीशन. ठीक. दूसरा जो है वो इक्वेशन आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाय टाइम पीरियड टी. और थर्ड इक्वेशन क्या आता है? एवरी एक्शन देयर इज एन reaction, equal and opposite reaction. Are you able to get me or not? So the question arises now that what is this special kind of frame? Are you able to get me? Then we'll see this. We'll try to understand. एक बार एक ध्यान से चीज को देखते हैं. तो अपन एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? थॉट एक्सपेरिमेंट. ध्यान से देखो. तो मान लो तुम्हारे पास एक लिफ्ट है. क्या है? ठीक. और इस लिफ्ट के अंदर अपन एक थ्रेड लिया और उस थ्रेड से एक ब्लॉक को अटैच कर दिया. क्या कर दिया? I attached a block of mass with this thread, and then there are two persons which are looking over here on this particular lift. One person which is inside this lift. Okay, I call this as observer A, and another person who is sitting on the ground, and this is my observer B. Are you able to get me or not? Both are watching this lift. Let us consider that, let's suppose the lift was going up or down. Which one I should consider? Which one you want? Up or down case? Okay, so let us consider that this lift was going down with some kind of acceleration A. Are you able to get me or not? So let us consider that this lift was going down with some kind of acceleration. Is this clear? सोचो जरा हो क्या रहा होगा अगर मान लो ये जो ऑब्जर्वर ए है, मान लो अगर फर्स्ट केस, अगर if the initial if the particular if the lift was at rest initially, if the lift was at rest initially, अगर इनिशियली लिफ्ट कैसा था? रेस्ट पर था. तो क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, लेट्स सपोज इफ आई लुक फ्रॉम ऑब्जर्वर ए एंड इफ आई लुक फ्रॉम ऑब्जर्वर बी, द पर्टिकुलर टेंशन, मतलब मैं अभी टेंशन लिख दे रहा हूँ है ना, बाद में अच्छे से समझाऊंगा ये टेंशन क्या होता है. तो दिस टेंशन शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg और नॉट? यस, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, एंड that will same match with the observer b also. Are you able to get me or not? But let us consider in the second case when the lift is moving. When the lift is moving, what will be the observer A will see? Let us do not think about A. Let us think about B first. What B will see?
block is also moving down, means the particular block has some kind of acceleration due to that. Yes, isn't it? So if the particular observer B will watch it, what he will predict? He will say, now as the lift is going downward, since the block is at rest, T might be exactly equal to how much? Mg. Are you able to get me or not? Tension will be exactly equal to mg now. According to B also. Why? Because through observer B. Because what he will say? He will see that the mass is attached with the thread, that mass is at rest or not. You think it should be at rest? Okay, so basically when the lift is moving, so T should not be exactly equal to mc, isn't it? Yes. So you are saying, so that's what you are saying, that if I'm saying that T is equal to mg was at rest, when the lift starts to move, T must not be equal to mg, isn't it? So, so through observer B or any observer if I take. So the question arises now, why T is not exactly equal to mg if the things start to move, isn't it? यस तो जैसे मान लो, अगर मानते हैं एक ट्रॉली पकड़ते हैं, एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, जैसे मान लो एक रॉड पे मैंने एक ट्रॉली रख दिया, क्या रख दिया? ट्रॉली। तो देख, अगर अगर अपन एक ट्रॉली को रख दिए, ध्यान से देखना जरा, तो ये ट्रॉली आगे बढ़ रही है, ठीक, इसके ऊपर एक मैंने ब्लॉक रख दिया, एक मास एम का ब्लॉक रख दिया, और यहाँ पे बैठा दिया चीटा, तुम हम सब दोनों मिलके क्या बन गए? एक चीटा बन गए पिछले जन्म के पापों के द्वारा, एंड वी आर सिटिंग ऑन दिस ट्रॉली एंड लुकिंग एट दिस ब्लॉक, दिस ट्रॉली स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ आई वंस अगेन ट्राई टू ऑब्जर्व इट। अब ध्यान से देखो, अगर ट्रॉली पहले रेस्ट पर था, तो जो मान लो एक ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? ग्राउंड पे। तो अगर मान लो एक ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा है, तो व्हाट ही विल ऑब्जर्व? दैट बोथ आर एट रेस्ट इनिशियली, इजंट इट? Yes, but when it starts to move, what will be the observer in cheetah? What will be the observation in cheetah frame and this particular observer? Can you tell me? Let us consider this is observer A and this is observer B. So what will happen with the direction of motion, means what will be the particular अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये मास एम क्या करेगा ऑब्जर्वर ए और बी के रिस्पेक्ट में, अगर ये ट्रॉली एक्सेलरेट करने लगे तो बताओ जरा, पहले ये बताओ। अकॉर्डिंग टू बी मास एम इज, तुमने क्या बोला? ए के रेस्पेक्ट में मास कैसा फील होगा? रेस्ट में फील होगा। और बी के लिए कैसा मास फील होगा? इट इज मूविंग। हाउ इज two things are possible at the same instant of time, isn't it? So there is a discrepancy over here with respect to observers or not? Yes. So we will try to understand this discrepancy. How if I change the observer, what is happening? Something is happening, we know that. Then how, what is happening with respect to these observers? We need to understand in a much more perfect sense or not? मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर मैं दोनों चीजें, अगर सारे की सारी सिस्टम रेस्ट पे है और दोनों ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है, तो वो जो सिस्टम को नोटिस कर रहे हैं, वो एकदम एग्जैक्ट सेम जो इक्वेशन जो भी कुछ फॉलो कर रहा होगा वो फील आएगा। लेकिन जैसे ही तुम देखोगे जरा, अगर तुमने उसी बॉडी को मूव कराना स्टार्ट कर दिया और तब तुम किसी ग्राउंड ऑब्जर्वर से नोटिस करना स्टार्ट करोगे, तो ग्राउंड की ऑब्जर्वेशन अलग होगी और द पर्टिकुलर ऑब्जर्वर ऑन द पार्टिकल की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो कैसी रहेगी? अलग रहेगी। आर यू एबल टू गेट मी? So this difference in the different kinds of observation can change even some kind of equations of motion also. यस। तो अब ध्यान से देखो होता क्या है। अगर मान लेते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा केस समझते हैं कि सर, अगर इफ देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m which I kept over here, ठीक है, and then on this block of mass m I applied some force, ठीक है, मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक, तो ये ब्लॉक ऑफ मास m एक्सेलरेट होगा या नहीं होगा? होगा। अगर मान लो इधर से फोर्स कितनी है? F1, और इसको मैंने पीछे से एक फोर्स लगा दिया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी के ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, F1 और F।
लेकिन फोर्स F1 की जो वैल्यू है ना बेटा, फोर्स F1 इज लार्जर देन F2। फोर्स फोर्स F1 क्या लिख रहा हूं मैं, इज ग्रेटर देन F2। तो सोचो जरा, अगर मैं इसको इक्वेशन की तरह लिखने की कोशिश करूंगा तो ध्यान से सोचो, तो बेसिकली F1 F1 is helping in the acceleration or not, while F2 is opposing the acceleration or not. So whatever the is acceleration will be created, that acceleration will be created by which kind of force? Net force. So can I say that net force is nothing but mass into acceleration? But what is net force? That is nothing but F1 minus F2, which is equal to what? Mass into acceleration. And this is what we call it as equation of motion. इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? Equation of motion. Equation of motion कहने का मतलब हुआ कि जो भी नेट फोर्स तुम्हें एक्सेलरेट कर दे और उसको हम एस्टैब्लिश कर पाए कि इक्वेशन में, वी कॉल दिस एज इक्वेशन ऑफ मोशन। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? So in simple terms, can we say nothing but the, you can say the force minus repulsive force is equal to mass into basically acceleration. Is this clear or not? यस तो अब ध्यान से देखो, इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं एंड लुक इनटू द वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस केस ऑफ फिजिक्स एंड वी ब्रिंग दिस टू यू एंड आई कॉल दिस एज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही है ना? सृष्टि, आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है? कुछ बताओ जरा इसके बारे में, क्या होता है ये? पढ़ा है ना तुमने? तो बताओ क्या होना चाहिए। थोड़ा डेप्थ में चलूं ना? शुड आई गो इन डेप्थ और नॉट? आई शुड ना? मजा आ रहा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन अ परफेक्ट वे? ऐसा लगता है तुम्हारे स्कूल्स में नहीं हुआ होगा, है ना? ओके okay. तो अब देखो, बताओ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होता है। अब इस चीज को हम समझेंगे बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाएंगे, डेप्थ ऑफ मैथमेटिक्स विल गो, विल सी द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स, विल सी द एसेंस ऑफ वेक्टर्स ओवर हियर एंड देन विल मूव अहेड। ठीक, मान लेते हैं ये दो फ्रेम्स है, कितने फ्रेम्स है? दो, ठीक है। दो फ्रेम कहने का मतलब ये हुआ कि दो तरह के ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक। दोनों ऑब्जर्वर के ऊपर एक एक फ्रेम अटैच कर दिया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अटैच कर दिया। मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। आई कॉल दिस एज ऑब्जर्वर ओ डैश, एंड यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, आई कॉल दिस एज ऑब्जर्वर व्हाट? ओ। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? दिस इज फ्रेम, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश वाई डैश। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? I call this as frame S and this frame as S dash, ठीक है। अब इस S dash फ्रेम में एक पार्टिकल को रख दिया, क्या चीज को रख दिया? पार्टिकल। I kept my particle over here. Now if I look into this particle, then with respect to S dash frame, can I just draw a particular, क्या मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता? व्हाट दिस विल बी? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O dash। Yes. Now, since this observer is at some distance O from O, so even I can define a position vector of my observer O dash with respect to O or not. And you know that if these two are vector quantities, I can join these vector quantities. Yes. Now, what is this vector quantities representing? Is it representing the position vector of particle with respect to O or not? तो मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसको हम कैसे समझेंगे? अच्छे से समझ। मान ले एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो एक इस यहाँ पे एक रेलगाड़ी चल रही है, क्या चल रही है? एक रेलगाड़ी मूव कर रही है, दिस इज प्लेटफॉर्म एंड देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स। वन person who is standing on this platform observing, another person in the train, and another person selling the chana in the train। are you able to get me or not? There are how many kinds of person? Three persons, ठीक है। एक बार मेरे को अच्छे से ड्रॉ करने दो। There are three peoples, one is standing on the platform,
ठीक है। और यहाँ पे सामने एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, उस ट्रेन के अंदर दो पर्सन और, एक पर्सन जो कि चेयर पे बैठा हुआ है और दूसरा पर्सन जो काबुली चना मीन्स ही इज सेलिंग समथिंग। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? Now, if I look into the motion of each of this, basically this Kabuli chala selling guy motion can be described with respect to this first person, isn't it? Now, मतलब जो भी ट्रेन में काबुली चना बेच रहा है उसको हम देख सकते हैं ट्रेन के अंदर बैठ के, है ना? और दूसरी बात जो है कि ये जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो भी तो इस अनदर पर्सन जो चेयर पे बैठा है उसको देख सकता है या नहीं देख सकता? यस। सो और ये भी पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उस काबुली चने वाले को भी देख सकता है, बोलो हाँ या ना? तो ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा एक ऑब्जर्वर ओ हो गया, दूसरा ये ऑब्जर्वर ओ डैश हो गया, और ये मेरा पार्टिकल हुआ या नहीं हुआ? तो बेसिकली टू डिफाइन एनी काइंड ऑफ पार्टिकल इन अनदर फ्रेम वी नीड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पोजीशन वेक्टर? थ्री पोजीशन वेक्टर्स, बोल हाँ या ना? इज दिस क्लियर और नॉट? यस। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिकली कैन आई राइट दिस आर vector PO is exactly equal to R vector PO dash plus R vector O dash with respect to, yes. Now this position vector can change with respect to time. If I differentiate it, I'll get the velocity of particle P with respect to observer O as velocity of particle P with respect to observer O dash plus velocity of this observer O dash with respect to O, or not? यस। अब ध्यान से सोच जरा ये क्या समझा रहा है। ये इक्वेशन तुम्हें एक इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। कैसा इंट्यूशन? कि मान लेते हैं सर अपने पास एक फ्रेम है, ठीक है? I'll copy that frame a minute. Okay, I'll just copy this frame. Okay, we can visualize it in perfect way. Next, control V. 1 minute. ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो I have this frame, ठीक। अब ध्यान से देखो तो इक्वेशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P with respect to this O is exactly equal to velocity of this particle P with respect to this O dash plus velocity of particle observer O dash with respect to O। अब ध्यान से सोचो, अगर मान लो ये फ्रेम S, ये जो S फ्रेम है ये कैसा है? रेस्ट पर है। कैसा है बेटा? If that frame is at rest, then acceleration of particle O with respect to will be exactly equal to acceleration of particle P with respect to O dash, or not? And since this pit is at rest, this quantity has become how much? Zero. Means इसका, अरे भाई अगर इस डैश रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ विल बी जीरो, और नॉट? ओके। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि सर if you are finding the acceleration of this particular point with respect to this observer, then that acceleration of this particle with respect to this observer is similar with the acceleration of this particle with respect to this observer also। are you able to get me or not? मीन्स दोनों ऑब्जर्वर के रेस में पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है? सेम है। अगर दोनों ऑब्जर्वर कैसे हैं? रेस्ट पर। कैसे हैं? Are you able to get me or not? Yes. Are you able to understand me? सेकेंड पॉइंट, अगर इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल जाएगा ना फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल P with respect to this S dash frame is exactly equal to force acting on my particle P with respect to S frame also। Are you able to get me or not? So both forces are what? Same। means if my frames are at rest, if the observers are at rest, मतलब अगर दो ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया ऐसे ऐसे और सामने एक ब्लॉक लगा के फोर्स लगा दिया, तो दोनों के लिए जो फोर्स होगी वो कैसी आएगी बेटा? सेम आएगी। कैसी आएगी? आर एबल टू गेट मी और नॉट? नेक्स्ट थिंग, आई कैन इवन कंसिडर दैट S dash कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, मान लो S dash को अपन ने क्या चीज से मूव करा दिया? constant velocity। Then can you write the equations?
Please try to write the equations. Till that, I'll drink some water. 1 minute. Yes, 1 minute. So next, yeah. So can you tell me what will happen if the S dash starts to move with constant velocity? Then consider that means if S dash moves with constant velocity, then I can write velocity of O dash with respect to O is some V or not. Let us it is going towards right with V. So I can write it as V or not. Yes. So can I write V of PO is equal to V of PO dash plus V vector, isn't it? Now if I find the acceleration, although if it is if it is a constant velocity, the differentiation of this will become zero or not. So once again, I'll get what? Acceleration of PO is equal to acceleration of PO dash. And if I multiply by mass, then I can once again force in PO is exactly equal to force with respect to PO dash. Are you able to get me or not? तो मतलब चमत्कार हो गया ना बेटा कि अगर किसी रोड के ऊपर ब्लॉक रख दिया मास एम का अगर दो ऑब्जर्वर से एक ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है और एक ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी अब इस बार मूव करने लगा तो भी इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा सेम दिखाई पड़ेगा कैसा means the force with respect to this observer A on this mass M and this observer A constant velocity observer A with means this observer B also which is moving with constant velocity both for both of them it we will say that mass M is experiencing which kind of force F. Are you able to get me or not? Understood. And that is why they are called as inertial frames. कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ फ्रेम वो ऐसे फ्रेम्स जिनके लिए पार्टिकल के ऊपर सेम फोर्स फील हो कैसा फोर्स फील हो एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इनर्शियल ऑब्जर्वर्स मींस ये जो दोनों ऑब्जर्वर्स होंगे ये कैसे ऑब्जर्वर्स बन जाएंगे इनर्शियल ऑब्जर्वर क्यों क्योंकि इन दोनों के लिए मींस आई विल टर्म स्पेसिफिकली आई विल टर्म एस डैश एज inertial observer because whatever is the force experienced with respect to O it is same as the force experienced with respect to O dash although S dash is moving with constant velocity V. Are you able to get me or not? Yes, so you got the definition of inertial frame of reference. So basically, I told you that there are two frames of reference. One is called as inertial. Why we called it as inertial? Now you got to know that force, Newton's laws of motion are basically same, isn't it? And that is why we call it as inertial frame. Are you able to get me or not? So basically, what is inertial frame? When S dash is either at rest or moving with constant velocity, when a frame is at rest or moving with constant velocity, then that frame is going to be called as inertial frame. And in that frame, force is nothing but mass is equal to acceleration, whether you measure with respect to S or measure with respect to S dash. F is always exactly equal to how much? M. मेरी बात समझ में आई नहीं है? Yes, मतलब अगर मैं अगर मैं एक ब्लॉक मान लो मास एम का और इसके ऊपर फोर्स एफ लगा दिया दिस फोर्स विल जनरेट सम एक्सेलरेशन ऑन दिस ब्लॉक isn't it now there are two observers one is at rest A and another one is at moving observer B moving with constant velocity B then for both of them the mass this mass is basically following the equation F is equal to how much ma are you able to get me or not understood मजा आया now you got to know what are the properties of inertial frame. The frame is either at rest or the frame is moving with constant. मेरी बात समझ में आई या नहीं आई क्या उन दोनों उन उस फ्रेम में क्या फील होगा कि सारे ऑब्जर्वर्स के लिए जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स फील होगा वो कैसा रहेगा F इज इक्वल टू
ma. Are you able to get me or not? So the last thing is left that now let's do a chamatkar. Bring a chamatkar and let's do one thing. Instead of considering them to be rest or moving with constant velocity, make them accelerate. So this is S dash, this is S, and this time this S dash is moving with some kind of acceleration A naught. Are you able to get me or not? मेरी बात समझ में आ रही है? अब वन सेकेंड मान लो O O डैश और ये क्या हो गया O और ये हो गई अपन की पार्टिकल ना बेटा, हाँ या ना? अब जोड़ दे इसको, पोजीशन वेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आई कनेक्ट देम विद सम पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो ध्यान से देख, once again I can write r of po dash is equal to r of o dash o plus sorry 1 minute, what I have written wrong, r of p with respect to this one na, so r of p with respect to o is exactly equal to r of p with respect to o dash plus r of o dash with respect to o. If I differentiate it, so once again I'll get the velocity equation. V of po is equal to v of p with respect to o dash plus v of o dash with respect to o. Now there is an acceleration, so if I again differentiate it, I get something. I get something, and what I get is a very interesting result that this differentiation provides me a knot. Are you able to get me or not? Yes. Are you able to get me? So what is actually a knot? A knot is nothing but if I can I, so can I write APO dash as APO माइनस ए नॉट, और इसी चीज को तो बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इक्वेशन जिसका नाम है स्यूडो फोर्स इक्वेशन। आर एबल टू गेट मी और नॉट? अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझो कि सर अगर अपन ने निकाला, अगर ये ऑब्जर्वर ओ है, मतलब अगर मान लेते हैं ये हो गया प्लेटफार्म और ये हो गई ट्रेन, और ट्रेन चल दी एक्सेलरेशन ए से, क्या जैसे चल दी एक्सेलरेशन ए से, तो अगर मान लो प्लेटफॉर्म पे एक चच्चा बैठ के देख रहे हैं और दूसरे चच्चा ट्रेन के अंदर है, और इस ट्रेन के अंदर एक काबुली एक ब्लॉक रख दी मास एम, क्या रख दी गई मास एम। तो ध्यान से देखूं तो अगर मैं इन सब पे मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स का इक्वेशन मिलेगा ना? तो क्या मिला, फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पी ओ इज इक्वल टू फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पी ओ डैश प्लस ये एक अनदर फोर्स ऐड हुआ या नहीं हुआ, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर मान लो अगर अपन प्लेटफॉर्म से खड़े होकर देखेंगे तो इस मास एम के ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, वो दो तीन तरह की फोर्स लग रही है। पहली तो जो फोर्स इस ट्रेन की वजह से लग रही हो, प्लस ये ट्रेन के एक्सेलरेशन की वजह से जो भी फोर्स लगे उतनी फोर्स अप्लाई होगी। और एबल टू गेट मी? लेकिन अगर मैं पीओ डैश के हिसाब से देखूं, मतलब जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है एस डैश उसके हिसाब से देखूं, तो मैं लिख सकता हूं ना, एफ ऑफ पीओ डैश इज नथिंग बट फोर्स ऑफ पीओ माइनस एम ए नॉट। ये है क्या चीज, इसको इधर लिखता हूं साइड में ताकि और अच्छे से समझ में आए। एफ ऑफ पी ओ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ पी ओ माइनस एम ए नॉट। आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो मतलब ये समझ में आया कि सर ये क्या देख रहे हो, एफ ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू विच फ्रेम ओ डैश ना इज नथिंग बट द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पी विद रिस्पेक्ट टू, ये तो कॉमन, ये तो मतलब पहले से मालूम रहेगा कि रेस्ट फ्रेम में पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना है। अब जब मैं इस पर्टिकुलर फ्रेम को एक्सेलरेट कर दिया तो ध्यान से क्या देखा कि इस पार्टिकल के ऊपर तो एक फोर्स प्रेजेंट है, लेकिन वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है ना।
where that force which is present in directly opposite direction is nothing but the mass into the acceleration of frame a naught. Are you able to get me or not? एंड इसी चीज को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इसी का नाम क्या है? आर एबल टू गेट मी और नॉट? मजा आया क्या? तो एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछे कि स्यूडो फोर्स किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है, रेस्ट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में? ये उतना मत सोचो, पहले ये बताओ, ये जो स्यूडो फोर्स माइनस एम ए नॉट जो आ रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये एस डैश से मेजर कर रहा हूं तब आ रहा है या एस से मेजर कर रहा हूं तब आ रहा है? ध्यान से देखो, यस, अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन क्या चीज का है? एस डैश क्या है ना, फोर्स ऑन द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू विच फ्रेम? ओ डैश फ्रेम। ओ डैश फ्रेम तो यही है ना बेटा। तो इस पार्टिकल, इस ऑब्जर्वर के, ओ डैश ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जैसे ही मैंने पार्टिकल को नोटिस किया तो फील किया कि जो भी ओरिजिनल फोर्स प्रेजेंट हो उसके पीछे के डायरेक्शन में एक और एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि खुद ओ डैश क्या कर रहा है आगे की ओर, एक्सेलरेट। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? तो pseudo force, so pseudo force is appearing for not an observer which is at rest, for an observer which is itself a frame and accelerating. Are you able to get me or not? Are you able to understand me? तो इस ट्रॉली के, इस चीटे के रेस्पेक्ट में जो तुमने आंसर बोला था, इस चीटे के रेस्पेक्ट में जो मास एम होगा वो रेस्ट पे नहीं होगा, बल्कि कहाँ फील होगा, कहाँ आ रहा है वो, पीछे। कहाँ आ रहा फील होगा? क्योंकि ये जो चाचा बन गया तुम्हारा, ये जो चीटा बन गया, क्या वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम बना या नहीं बना? आर एबल टू गेट मी और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? मेरी बात समझ में आई या नहीं है? तुम जब ट्रेन में बैठते हो और ट्रेन जैसे बस में बैठे और बस ने अचानक से धक्का लिया तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा ना उसके अंदर के पार्टिकल्स तुम्हारे तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। हाँ। तो बेसिकली सूडो फोर्स किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रखता है? वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर कैसा कर क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट। एंड दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ ऑब्जर्वर्स आर कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉन इनर्शियल फ्रेम। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? So what is a non-inertial frame? Non-inertial frame is nothing. It is a frame in which any particle, if I keep it, all those particles will feel an force or a force which is directly opposite to the direction of the frame acceleration. Are you able to get me or not? Are you able to understand me? मतलब अगर मान लो एक ऐसी फ्रेम है जो एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रही है, तो मास m जो है वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फील करेगा? इस अपोजिट डायरेक्शन में। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? So does my pseudo force appears due to the ground observer? No. It appears due to the frame itself because the frame is accelerating in nature, and that is why these frames are termed as which kind of frames? Non-inertial. Are you able to get me? So you got the biggest conclusion of the day today. There are two kinds of frame. One is inertial, the second one is non-inertial. Inertial means the frame which is either moving with constant velocity or it is at rest, and the force by both of the observers on this particle experienced will be what? Same. But if I look due to the particular non-inertial observers, what do we observe? The force observed by both of the particles are basically going to be different. And specifically for the frame itself, the particle will feel another force which is directly opposite, and we call that force as pseudo force. Are you able to get me or not? Understood? So can I define? Can I just give the heading means definition of non-inertial frames? So non-inertial frame. What are these frames? They are nothing but those frames which are accelerating in nature. ठीक है? Accelerating in nature. First point, second point, non-inertial frame means
every particle in this frame feels the force, feels the force extra present in opposite direction of the acceleration of frame itself. Are you able to get me or not? What are non-inertial frames? Every particle मतलब those frames which are accelerating in nature, और उस फ्रेम के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स के ऊपर क्या फील होगा, एक स्यूडो फोर्स फील होगा, और तभी, हाँ, और तभी उस फ्रेम को हम चेंज कर पाएंगे इनर नॉन इनर्शियल से कैसा, इनर्शियल, बाय creating an pseudo force on the particle itself. Are you able to get me or not? Understood. सॉरी, इज दिस क्लियर और नॉट? मजा आया? ठीक है, तो आज समझ में आया ना व्हाट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट इज गोइंग टू बी नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो भी पार्टिकल होगा किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फॉलो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर और नॉट? यस, ऑलवेज। बेसिकली मान लो, अगर जैसे मान लेते हैं किस क्या मैं बोलूं, अगर मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर एक अनदर ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक, ये मास एम अगर इस एक्सेलरेशन ए से जाएगा, तो नीचे वाली जो मास एम है वो कहाँ जानी चाहिए, बेसिकली पीछे, क्योंकि ये इस पे ये जो मास एम का ऑब्जर्वर बन गया, कैसा बन गया, नॉन इनर्शियल, तो उसके लिए जो भी पार्टिकल अटैच्ड होगा वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, पीछे की डायरेक्शन। आर यू एबल टू गेट मी? यस, इज दिस क्लियर और नॉट? Understood. So this is what is going to be called as inertial and non-inertial frame of references and the use of pseudo force. Pseudo force कहाँ लगाओगे, जब तुम्हारा बॉडी कैसा हो, एक्सेलरेटिंग इन नेचर हो, कैसा हो, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो pseudo force अपीयर होगा क्या, नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो वेलोसिटी में क्या होगा, the particular body will feel free. Are you able to get me or not? Understood. So what we are going to do is we are going to stop it till over here only, and then we'll tomorrow we'll meet with the normal and all different kind of contact forces, and then I'll finish the particular understanding of every kind of block problem tomorrow. Are you able to get me or not? Yes. And if you'll have doubt, you can ask me right now. Okay.